Hello bachcho, let's read the question. The question is, what factor determines the binding of carbon dioxide to the active site of Rubisco? तो यहाँ पे ऑप्शंस है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड रिलेटिव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि रूबिस्को can catalyze the fixation of carbon dioxide, in the Kelvin cycle, और ये कैटालाइज कर सकता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम ये है फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। So the first option is intensity of sunlight. तो sunlight क्या करता है? Sunlight intensity affect the overall rate of photorespiration. So sunlight can affect the overall rate of photosynthesis by providing the energy for the light dependent reaction. So ये responsible नहीं है for binding of carbon dioxide to Rubisco. So it is not responsible for binding of carbon dioxide with Rubisco. So ये आंसर गलत है। So next option is number of chloroplast. So number of chloroplast क्या करता है? इसका इफेक्ट क्या है? Number of chloroplast in a cell that influence the overall photosynthetic capacity of the cell. ये overall photosynthetic capacity को affect करता है और influence करता है। But it does not directly affect the binding specificity of Rubisco for carbon dioxide over oxygen. So option B is also incorrect. Now option C. Option C में क्या है? Opening and closing of stomata. This opening and closing of stomata, regulate करता है exchanges of gases. ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। Between plants and the atmosphere, it affects the internal carbon dioxide concentration, but it is not directly related with the carbon dioxide binding with Rubisco. So this option is also incorrect. तो लास्ट ऑप्शन ये है कि relative oxygen and carbon dioxide concentration. So this relative concentration of oxygen and carbon dioxide
oxygen and carbon dioxide directly affect the Rubisco activity. Directly affect the Rubisco activity. तो ये क्या करता है? High carbon dioxide levels favor the carboxylation reaction. So it favor और ये increase करता है carboxylation reaction को और it stimulates carboxylation reaction, that is photorespiration. So the specificity of Rubisco for carbon dioxide versus oxygen depends on their relative concentration. So the correct option is relative oxygen and carbon dioxide concentration. Hope you all understood. Thank you.